So what do we understand by time value of money? 1 year later. The first reason is inflation, second is cost. Okay, what do you mean by inflation? Price increase. Correct. So prices increase. अभी आप जाओगे 1 किलो प्याज खरीदने तो वो 50 का आएगा, एक साल बाद मे बी वो 60 का आएगा. That is basically inflation. So with that 100 rupee sum, you will be able to buy lesser commodities 1 year later, right? And इसीलिए what do you want to do? You have some value attached to that money. You want to maybe invest it somewhere, maybe give credit to someone so that you can earn return which is at least beating inflation. Okay, so that your money does not depreciate in value, right? And the second reason is opportunity cost. Now, in terms of opportunity cost, it is an economics concept आपने पढ़ा होगा class 11, 12 में. Basically, इसका exact definition is the cost of your next best alternative. तो money use करने के पास आपके पास दो alternative होते हैं. You have two alternatives in case of money. Either you spend that money to consume goods right now to earn satisfaction. तो इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा पहले, satisfaction earn करने के लिए you consume goods, right? So if you consume goods right now, you need to pay right now, you will get immediate instant satisfaction from it. But the other option is that you save money for later, or you forgo consumption now to consume later in life. इसका मतलब क्या है? Your satisfaction from foregoing consumption now, investing the money is higher than the satisfaction that you earn from consuming now. अगर अभी आप कंज्यूम कर लेते हो, उसका सेटिस्फैक्शन आपके पास ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इन्वेस्टिंग, देन आप अभी कंज्यूम कर लोगे. इट इज इन ह्यूमन नेचर टू डू दैट. बट will you forgo your consumption now so that you can invest the money, maybe earn from the money and consume a higher later. ठीक है? So for you to get that satisfaction from foregoing consumption, you need to invest, and the opportunity cost of investing is consuming now. तो आप तभी इन्वेस्ट करोगे जब आपका satisfaction from consuming later is greater than consuming now, and that can only happen if your return is much higher than your inflation, क्योंकि then only you will be able to buy extra goods tomorrow instead of buying it today. तो ये main कारण, which is why we attach some percentage to it that you are expect to earn year on year and get it. Now, basically, start करना चाहिए. How much should you invest to earn? Now that depends on multiple factors. We will talk about those factors, right? ठीक है? So जो आपका required rate of return होता है, the return you need, ठीक है, to forgo consumption, that has these three subparts. First is the real rate of return, second is inflation, and third is risk premium. ठीक है? In a world where inflation is zero, the minimum amount, in a world where inflation is zero, the minimum amount of return you need to forgo your consumption now to later is this return called real rate of return. ठीक है? क्योंकि अभी आप कंज्यूम करोगे तो आपको ऑब्वियसली सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और वो सेम अमाउंट आप, मतलब आप आज एक सपोज वड़ा पाव खा रहे हो, ठीक है, आपको एक सेटिस्फैक्शन मिल गया, बट वो सेटिस्फैक्शन आपको तुरंत मिल गया. वो अगर आप कल खाते, ठीक है, तो वो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल थोड़ा कम होता, बिकॉज आपने आज छोड़ के कल खाया उसको. लेकिन अगर कल आप सपोज एक वड़ा पाव की जगह 1.5 वड़ा पाव खाते हैं, तो मे बी आज से ज्यादा सेटिस्फैक्शन आपको कल मिलता, राइट? तो ये वाला रेट जो होता है, रियल रेट, that is the minimum required rate for a person to forgo consumption now and invest the money. इससे कम रिटर्न मिलेगा तो आप बोलोगे मैं अभी खा लेता हूँ, मुझे नहीं चाहिए कल वड़ा पाव, मुझे अभी सेटिस्फैक्शन देना. ये सिंपल लॉजिक है. ठीक है? सेकंड, you don't, I'll give you this PDF. I'll give you this PDF. I'll tell you when to write. अभी just listen, look at it. ठीक है? I'll share this PDF with you. और इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, कॉपी कम. ठीक है? तो इन्फ्लेशन आपका सेकंड, जैसे मैंने पहले बोला था, आप मिनिमम इन्फ्लेशन तो पाना ही चाहोगे, नहीं तो आप जितना आज कंज्यूम कर रहे हो कल उससे कम ही कर पाओगे विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव. सो द सेकंड कंपोनेंट इज इन्फ्लेशन. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंपोनेंट इज रियल रेट, इन्फ्लेशन का कंपोनेंट इज इन्फ्लेशन. थर्ड कंपोनेंट इज रिस्क प्रीमियम. अब रिस्क प्रीमियम क्या होता है? इट डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर इन्वेस्टिंग. ठीक है? आप आज आए
एक और बंदा आएगा भरत बोल के, he will join us like 10-15 minutes later. ठीक है, वो अगर आपसे आके आज पैसे मांग रहा है, बोलता है आप मुझे दे दो पैसे, जरूरत अगले हफ्ते लाके दे दूंगा वापस। ठीक है, आप बोलोगे भाई मेरे पास तो 1000 रुपए ही है, मुझे जाके उसका CFA लेवल 1 का बुक्स खरीदना है। ठीक है, तो मैं अभी जाके वो बुक्स खरीदने वाला था, बट आप मेरे से ले लोगे तो मैं वो बुक्स नहीं खरीद पाऊंगा। ठीक है, एंड क्या गारंटी है कि आप मुझे एक हफ्ते बाद यहाँ मिल के मुझे दे दोगे पैसे? एग्जैक्टली क्या गारंटी है उसका? देयर इज नो गारंटी। सो देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क यू आर टेकिंग, यू आर फॉरगोइंग योर CFA लेवल 1 कंजम्पशन। आप बोलोगे कि एक हफ्ता तक मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, उसके बदले मुझे 2% रिटर्न चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, फिर आप बोलोगे एक हफ्ते बाद CFA का नया करिकुलम बुक्स निकल रहा है, जिसका प्राइस फिर बढ़ के 1000 से 1200 रुपए हो जाएगा। आज मैं खरीदता हूँ वो 1000 रुपए का है, नेक्स्ट हफ्ते वो 1200 रुपए हो जाएगा। तो वो इन्फ्लेशन के लिए मुझे आपसे और 1% चाहिए। फिर मैं तो आज आपसे फर्स्ट टाइम आके मिला हूँ, ठीक है, आई डोंट नो यू, सो देर इज अ रिस्क कि आप मुझे मिलो नहीं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट हफ्ते आप मुझे मिलो नहीं, तो उसके अगेंस्ट मुझे ये एक डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम चाहिए। I want a default risk premium from you because I'm taking the risk that you might not meet me next week. Maybe I will charge that default risk premium an additional 2% from you. ठीक है, what else do I need? Abhi, if I give you that 1000 rupees, I will have no liquidity left with me. Okay, I will have no liquidity left with me. There might be an emergency. Maybe there might be any emergency. मुझे भूख लगने लग गया, मेरे पास पैसे नहीं होंगे खाने के लिए. So I am foregoing my liquidity. उसके अगेंस्ट मुझे I need another 0.5% from you. Okay, and then you say maturity, मतलब how long will I not have access to my money? Right now you're saying 1 week, तो maybe maturity के लिए I don't charge you anything. 1 week is a very small period. Maybe maturity के लिए I don't charge you anything. वही भरत आके आपको बोलता है 1 साल के लिए पैसे चाहिए, so I would have charged you some maturity premium as well. ठीक है, सो आपको कितना रिटर्न कोई से चार्ज करना चाहिए, उसके पीछे दीज आर द फैक्टर्स यू कीप इन माइंड व्हाइल चार्जिंग। ठीक है, दीज आर द फैक्टर्स यू कीप इन माइंड व्हाइल चार्जिंग। नाउ द क्वेश्चन इज, ये सब मैंने लिख दिया, ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज, ये हम लोग रिवाइज कर रहे हैं लास्ट वाला, ये अटेंड नहीं कर पाए थे, रिकॉर्डिंग के साथ कुछ हो गया है, वो एक्सेसिबल नहीं है फॉर सम रीजन, तो ये रिविजन चल रहा है। तो आपका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हो गया, ठीक है, आपका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हो गया, वो इन दिस केस क्या हो गया? इफ आई डू अ सिंपल एडिशन ऑफ ऑल द 5 फैक्टर्स, इफ आई डू अ सिंपल एडिशन ऑफ ऑल द 5 फैक्टर्स, रियल रेट का 2%, इन्फ्लेशन का 1%, डिफॉल्ट रिस्क का हमने कितना बोला था? 2%, 2%, फिर लिक्विडिटी का वी डिड 0.5 एंड मैच्योरिटी का वी सेड 0. ओके, सो हाउ मच रिटर्न डू वी नीड? 5.5% रिटर्न मुझे मिनिमम चाहिए, so that I can lend you the money. समझा? Clear? The pace is fine with you? You're understanding? Clear everything? ठीक है, now this calculation that we did, okay, इसका जो inflation and real rate का return part है, this is an approximate calculation. Okay, you add it, it is an approximate calculation. The actual calculation how it happens is that you first give me the real rate, उसके ऊपर मैं inflation लगाऊंगा, ओके, एंड -1. ठीक है, तो ये कैलकुलेटर से निकालिए क्या आता है। एंटर 1.02 इंटू 1.01, 1.0302 -1, which gives me which is 3.02%, right? Which is how much? 3 point, oh, this -1 is 3.02%. Okay, so if you would have done a simple addition, your answer would have come as 3%. I told you this is approximate. एक्चुअल से करोगे तो वो अप्रोक्सीमेट से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, ओनली मतलब 0.2% ज्यादा आ रहा है। ठीक है, सो इट इज वेरी क्लोज टू द अप्रोक्सीमेट आंसर, बट इट इज नॉट द एग्जैक्ट आंसर. सो इन योर एग्जाम यू गेट MCQ क्वेश्चंस, you might get
option A, इसका आंसर, they will give you inflation, they will give you real rate of return. They will ask you, so inflation plus ये जो required rate of return है, they might ask you what is the required rate of return, assuming there is no other risk premium. Second thing they can ask you is what is the nominal rate of return. Nominal is a sum of all five again. ठीक है, तो जब nominal पूछेगा and they give you no other risk premium, you can, if your answer is suppose the options look like 3%, 3.02 and 3.05, ठीक है, तब आपको exact calculation करना है because your answers are very close to each other, which is usually not the case. Usually CFA ऐसा करता नहीं है institute. Usually the answers are far apart. ठीक है, usually options look like 2.5, 3.02 and 4. ठीक है, so आप पूरा calculation, exact calculation नहीं करके भी आप B टिक कर सकते हो. Whatever is little above than your approximate rate is your answer. ठीक है, this is a technique to nominal rate of return. Nominal rate of return. Okay. This calculation test you said this will give ideas for what. Correct. This addition. This, see, there are two situations that can happen. Either they give you real rate, they give you inflation, and they give you 3 risk premiums. Okay, which is default, liquidity, and maturity. ये 3 risk premium देते हैं आपको. If they give you all 5, you need to simply sum all 5 up. ठीक है, they will ask you, they might ask you in 2 languages. Either they will say nominal rate of return, or they can ask you required rate of return. ठीक है, required rate of return is a sum of all 5. Nominal rate of return is 1 plus real rate into 1 plus inflation minus 1. Okay, clear? Nominal rate ये होता है, required rate में sum होता है सबका. ठीक है, and this is the exact, but exam में जल्दी करने के लिए आप बस sum कर दो. sum से जो भी आंसर आया 3% आया, उससे थोड़ा ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना. You don't even need to use your calculator. ऐसे आपका फटाफट हो जाएगा. ठीक है, आप ये एक बार कॉपी कर लो. ये क्वेश्चन फॉर्मेट ऐसा हो सकता है. In fact, you can write a question. Find the nominal rate of return and the real rate of return given your risk-free real, nominal rate of return and required rate of return. Find nominal rate of return and required rate of return given your risk-free real rate, given your risk-free real rate is 2%, risk-free real rate is 2%, inflation is 1%, inflation is 1%, default risk premium is 0.5%, 2%, and the money is being given out, for a very short period of time. And the money is being given out for a very short period of time. Answer में write nominal rate, risk-free nominal rate, risk-free nominal rate. Answer, risk-free nominal rate is equal to, then write this part, 1 plus real rate into 1 plus inflation
minus 1, which is equal to, ऐसे do an approximate equal to kind of, या ठीक है आप equal to लिख दीजिए 1.02 plus 1.01 minus 1 into 1.01 plus minus 1, which gives you an answer of 3.02%. This is also approximately equal to, वही लिख लीजिए, this is also approximately equal to inflation plus real rate of return. Inflation plus real rate of return. नहीं, डिफॉल्ट ये सब सेकंड में आएगा when we are talking about required rate of return. This you've written as nominal only अभी तक. This is part 1, which is nominal rate. Now write what is the required rate of return. मैंने ऊपर आपको लिखवाया है रिस्क फ्री रियल नॉमिनल रेट, देखिए हाँ, तो ये रिस्क फ्री नॉमिनल रेट का अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है, ठीक है. दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस. नाउ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, दिस इज सेम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट. वी हैड आस्क्ड फॉर बोथ, नॉमिनल रेट निकालने पूछा था क्वेश्चन में, एंड रिक्वायर्ड रेट भी पूछा था. तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2% plus 1% plus 2% plus 0.5% प्लस 0. 0 के नीचे अंडरलाइन करके लिखिएगा, 0 के नीचे अंडरलाइन करके लिखिएगा, since it is a very short period of time there is no maturity risk premium. ये जितना भी आपने लिखा था उसके ऊपर में give the heading reading 1 and 2 because this is pertaining to your first 2 chapters of QM. Reading 1 and 2, and the part that I have covered, it is one. The three things that are default. Liquidity. हाँ, maturity. Third is maturity. So we did a default का 0.5% लिए थे. Default was 0.5%. Liquidity was 2%. Okay. And maturity was 0 because I had mentioned in the question for a very short period of time. इसीलिए मैंने 0 के नीचे underline करके आपको वो लिखवाया कि since it is a very short period of time, there is no maturity risk. Clear? Clear? अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये सेम चीज मिलेगा, नॉमिनल रिस्क फ्री रेट, उसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है. एंड जो मैंने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न लिखा है उसके बगल में स्लैश करके आप नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क फ्री नॉमिनल रेट लिखवाया था और नीचे रिक्वायर्ड रेट लिखवाया था. रिक्वायर्ड रेट के बगल में आप उसको नॉमिनल रेट भी लिख लीजिए. तो दोनों में डिफरेंस क्या है, वन इज रिस्क फ्री एंड द अदर वन इज विथ रिस्क नॉमिनल रेट, ठीक है, which is also called as required rate of return. Clear? Now we know what the rates are. अब वो रेट को यूज करके how do we calculate कि how much we are earning. Suppose मैंने 100 रुपए डाले हैं 4 साल के लिए एंड मैंने एक परसेंटेज कैलकुलेट किया इस मेथड से, वो परसेंटेज ऑफ यील्ड आई रिक्वायर कंपाउंडेड एनुअली. How do I understand how much money I will get 4 years later? Okay, this is our second task. ये हमने लास्ट क्लास कर लिया था बट वो नहीं थे इसलिए मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ फटाफट. हाँ, करेक्ट, फ्यूचर वैल्यू. So what we will get later, it is called as future value. Okay, it is called as future value. What we are investing right now is called as present value. So write a question again. This इसका ये सेकंड पार्ट का हेडिंग आप दे दीजिए, फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू. सब हेडिंग है. This is under reading 1 and 2 only. Suppose we invest 100 rupees now at 4% compounded annually at 4%
compounded annually. Sorry, 10% compounded annually, my mistake. 10% compounded annually for 4 years. What is the payout we will get? What is the payout that we will get 4 years later? So this is what we used to do in compound interest calculation. जो बहुतों को आता होगा, मैं एक छोटा सा फटाफट रिवीजन करा दे रहा हूँ, ठीक है? सो ये करने के लिए दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट आप इससे टाइमलाइन समझ लो. टाइमलाइन आपको बाद में बहुत काम आने वाला है. दिस इज हाउ यू ड्रॉ अ टाइमलाइन. यू कैन कॉपी दिस. At 0 you are investing 100 rupees, which is a negative 100 outflow. Okay, and then at 4 at time point 4, what is the money that you will get as an inflow? ओके, सो ये जो आउटफ्लो होता है इसको हम कहते हैं कैश आउटफ्लो इन्वेस्टमेंट और प्रेजेंट वैल्यू. पीवीएस प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है. एंड आरआर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज आरआर, which we said is 10% compounded annually. Okay, this is denoted as RRR or I by Y. ठीक है, I by Y is a very specific notation. उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है. एंड वी you can copy this timeline at least. ये टाइमलाइन आप ऐसा बना लो, this will help you. ओके, ये टाइमलाइन एक बार बन जाए तो बताना मुझे, मैं फिर आपको बताता हूँ क्या लिखा है. डोंट कॉपी एनीथिंग, जस्ट मेक अ टाइमलाइन जिसमें आप 100 लिख के रखे हो अभी तक, बस. उसके नीचे आप लिखो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू नेगेटिव 100. हाँ, बिकॉज आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया, यू हैव पेड आउट 100 रुपीज राइट नाउ. ओके, सो इट इज अ नेगेटिव 100. राइट आई बाई वाई. आई बाई वाई इज इक्वल टू, आई बाई वाई ऐसे लिखते हैं, दिस इज द डिनोशन. I by Y is equal to required rate of return is equal to interest rate compounded periodically is equal to interest rate compounded periodically. लिख लिया आपने ये? हाँ, equal to, हाँ, is equal to interest rate compounded periodically, ठीक है, which is equal to 10% compounded annually. ये मैं पूरा एक्सप्लेनेशन इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको बाद में फॉर्मूला समझने में काम आए. कंपाउंडेड एनुअली, 10% compounded annually. ये क्वेश्चन में लिखवाया था मैंने, right? So this is an answer with an explanation of how to go about it. Okay, and then write n. N is equal to number of compounding periods is equal to number of years of investment into compounding frequency. Okay, is equal to 4 into 1, because 4 years के लिए हमने इन्वेस्ट किया. एंड कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी क्या है हमारा? हमारा कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी 1 है, बिकॉज ईयर में हम लोग एनुअली कर रहे हैं, ठीक है. इफ आई वुड हैव मेंशन सेमी एनुअल, कंपाउंडिंग 2 था, ठीक है. ये आप देख लो, इधर मैंने बनाया है. जब मैं नोट्स दूंगा तो ये आपके लिए क्लियर हो जाएगा. इफ यू वांट टू कॉपी इट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है. जब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको बेटर आपको समझ में आ जाएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. एंड देन यू राइट फ्यूचर वैल्यू. फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू payout at the end. Future value is equal to payout at the end, which is equal to, write this formula, equal to PV into 1 plus I by Y to the power n. You know what PV is now, you know what I by Y is now, you know what n is now. You know everything. ये आप पुट करोगे 100 into 1 plus 10% to the power 4. 100 into 1 plus 10% to the power 4, ठीक है.
the question future value कैसे निकालते हैं. Then I'll show you how to use the calculator to do it. अब आप एक बार स्क्रीन पे देख लेना वो समझ के, ठीक है. कैलकुलेटर कैसे यूज करते हैं मैं वो दिखा रहा हूँ. पहले मैं आप देख लो कि मैं कैसे कर रहा हूँ, उसके बाद आप खुद कैलकुलेटर में करना, ठीक है. सो जब भी आप ये कैलकुलेटर यूज करते हो, द फर्स्ट थिंग यू शुड टारगेट इज व्हाट इज इनसाइड द ब्रैकेट. ठीक है. ब्रैकेट में क्या है? 1 + 10%. कैन आई राइट 1 + 10% एज 1.01? सॉरी, कैन आई राइट 1.1? Can I write it as 1.1? 1 + 10%. So 10% क्या होता है? 0.1 होता है, 1/100. तो 1 + 10% is what? 1.1. Clear? Now उसको करना है raised to the power 4. उसको करना है raised to the power 4. तो raised to the power 4 के लिए this is the relevant button, y to the power x. Okay. So you press this and then you press raised to the power. क्या करना है आपको? 4 करना है. Then you press 4. You press equal to. तो आपका ये आ जाता है. So this is 1.1 raised to the power 4, and then you multiply it with the PV, the present value which we had seen, which was 100. So into 100 आया 146.41. ये आंसर आप लिख लो 146.41. ये आंसर आएगा आपको उसका, द फ्यूचर वैल्यू का आंसर. ठीक है. अब एक बार कैलकुलेटर में करो आप भी खुद. We enter what is inside the bracket. 1 + 10% is nothing but 1.1. Raise it to the power of 4. Then you do a y to the power x. Press 4. आगे आपका ये 1.4641 into your present value which was 100. ठीक है. Understood? Clear? Now I will show you how to do it without the formula as well. ठीक है. Formula you need to know for your understanding, but during the exam you don't need to actually use the formula and calculate. कैलकुलेटर में ये वाला जो पार्ट है वो आप डायरेक्टली इनपुट करके उससे भी आंसर निकाल सकते हो. ठीक है. Whenever you use this line, the third row in the calculator, n, I by y, pv, pmt, fv, before using that always press second and fv button. सेकंड से क्या होता है? आपका जो ऊपर में लिखा हुआ रहता है क्लियर टीवीएम, वो एक्टिवेट हो जाता है. ठीक है. आप देखो कैलकुलेटर में ऊपर क्लियर टीवीएम दिख रहा होगा आपको. ठीक है. तो आपको पहले ये टीवीएम के अंदर जितना भी वैल्यू स्टोर्ड है उसको आपको हटाना है. उसके लिए आपको सेकंड प्रेस करके एफवी वाला बटन प्रेस करना होगा, तो क्लियर टीवीएम हो जाएगा. व्हाट आर वी डूइंग? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसलिए उसको पहले क्लियर कर दे रहे हैं. अब हमें क्या एंटर करना है? पीवी हमने लिखा था 100 नेगेटिव. ठीक है. मैंने नेगेटिव आपको लिखाया था ये कैलकुलेटर यूज करने के लिए. फॉर्मूला में आप देखो, आप नेगेटिव 100 नहीं लिखे हो. एक बार देखो जो फॉर्मूला वाइज किए थे. हाँ, दैट इज नॉट नेगेटिव 100, बट प्रीवियसली पीवी में मैंने आपको नेगेटिव 100 लिखवाया था, बिकॉज इट इज एक्चुअली एन आउटफ्लो. बट आउटफ्लो से आपको फ्यूचर वैल्यू इनफ्लो मिलेगा. दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव फॉर यू. सो यू डोंट नीड टू मेंशन नेगेटिव 100 देयर इन द फॉर्मूला, but in this you will have to enter it as negative 100 so that you get a positive output. ठीक है. if we do not enter it as a negative 100, then आपका जो आउटपुट आएगा वो नेगेटिव आएगा. बट आंसर में वो नेगेटिव वाला आपको सिलेक्ट नहीं करना, आपको पॉजिटिव वाला सिलेक्ट करना. ठीक है. सो दिस इज 100. इसको नेगेटिव करने के लिए प्लस माइनस वाला बटन प्रेस करना होता है. यू डोंट नीड टू प्रेस माइनस. डोंट प्रेस दिस, यू हैव टू प्रेस दिस. ओके. So ये -100 हुआ. Then you store it as PV because this is our PV. You press PV, it got stored as PV. What was N? N was 4. Okay. You press 4, then you store it as N. What was I by Y? I by Y was 10%. Right? So you press 10, you store it as I by Y. Okay. And now what do you need to compute? You need to compute FV. Okay. So to compute FV, you press CPT, which is compute, and then press FV button. सेम आंसर आया. सेम आंसर आया. अब आप एक बार ट्राई करो अपने कैलकुलेटर में. CPT means compute. It is a compute function. Whatever you want to do, first press compute and then press FV. Okay. Now try it again in your calculator. Second clear TVM. हाँ, clear
TVM, so that what happens is that आपने स्टोर किया, इसके बाद क्वेश्चन में जाओगे तो जो आपने वैल्यूज अभी नहीं कर, सो एक्सट्रैक्ट क्लियर द फंक्शन ऑल टुगेदर एंड देन रीस्टार्ट व्हाटएवर सम यू आर डूइंग. ओके, सो सेकंड क्लियर वर्क, ये भी एक गुड प्रैक्टिस है बट इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता ऑनेस्टली. सेकंड क्लियर TVM, सेकंड क्लियर वर्क, you input 100 negative as PV, 100 negative as PV. हाँ, FV वाला बटन, करेक्ट. सो आपका सेकंड क्लियर TVM हो गया. स्क्रीन पे आपको कुछ नहीं, मतलब जीरो दिखेगा. ओके, देन यू एंटर 100, देन यू प्रेस दिस प्लस माइनस बटन, दिस वन. देखो नेगेटिव 100 हो गया होगा, राइट? देन यू प्रेस PV टू स्टोर इट एज अ PV. ओके, now you store n is 4, so you enter 4 and then press n. ठीक है, then you press 10, that is I by y, and store it as I by y. Now what do you want to compute? You want to compute your future value, so you press CPT and you press FV to compute the future value. Clear? ठीक है, same answer, just using the TVM function in your calculator, don't need to use the formula. ठीक है, so ये आप अपने वर्ड्स में बाद में लिख लेना. आई होप यू रिमेंबर इट. अभी हम लोग एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा. नाउ राइट दिस क्वेश्चन. द सेम क्वेश्चन एज अबव. कंप्यूट फ्यूचर वैल्यू. कंप्यूट, अब एफवी अब शॉर्ट फॉर्म में लिखने जाओ ताकि फट. आई एम गिविंग यू द क्वेश्चन. हाँ, कंप्यूट एफवी, राइट इट. when your initial investment is future value. FV is future value, right? Compute FV when your initial investment is 100, earning 12% compounded monthly. 12% compounded monthly. 12% compounded monthly after 4 years. After 4 years. ठीक है? How do we calculate this? How do we calculate this? First, we do it using formula. Then we do it using the TVM function. ठीक है? तो what will be 100 n is number of periods, number of compound periods, right? मैंने क्या लिखवाया था लास्ट क्वेश्चन में, एक बार रेफर करो. Number of compounding periods, which is equal to number of years into compounding frequency, right? Number of years क्या है 4, compounding frequency for monthly क्या होगा 12. तो number of compounding periods क्या हो जाएगा? In 4 years we have 4 into 12 months, which is 48 months. This is the number of compounding periods are in. Clear? What will be your I by Y? I mentioned it. It is interest rate compounded periodically. In which, in this sum, what is the period? Period is 1 month. In this question, what is the period? Period is monthly. Okay. So, I mentioned 12% compounded monthly, right? 12% compounded monthly is equal to 12 by 12 compounded periodically. ठीक है?
तो आप ये मत लिखना ऊपर, ये 12 मत लिखना, बाद में कंफ्यूज हो गया. Just write 12 by 12 compounded periodically, which is equal to 1%. Okay, yeah. So ये 1% कैसा है? You understood this 1%, the logic of 1%? Yeah. Okay. So continuing from here, now we know PV, now we know N, we know I by Y. Now we can use the formula. ठीक है? What was the formula? Formula for FV is equal to PV into 1 plus I by Y to the power N, 100 into 1 plus 1% to the power 48, 100 into 1 plus 1% is 1.01 to the power 48. इधर मैंने किया. Correct? With me? Done? Now how do we calculate this in the calculator? Do it with me. ठीक है? Do it with me. First we enter what is inside the bracket. Which is 1.01. 1 plus 1%. क्या होता है? 1.01. With me? Inside the bracket. ठीक है? We raise it to the power 48. Raise it to the power के लिए we press y to the power of x, then press 48. So it becomes 1.01 to the power 48. It becomes 1.01 to the power 48. We press equal to. This is 1.01 to the power 48. We multiply it with our PV, which was 100. This is the answer we got. 161.222. आया आपका तन्मय? y to the power x वाला बटन प्रेस करिए. Then 48 equal to, and then multiply it with 100. You will get this. Got this with me? Now how do we do it using the calculator? First we press second clear TVM, second, and then FV button to clear TVM. Then we press then we enter our PV. So enter 100, press the plus minus button. ऐसे प्लस स्लैश माइनस बटन दिखेगा आपको, उससे नेगेटिव 100 हो जाएगा. Then press PV button to store it as PV. Then we enter N. N is 48. 48. Press 48. Enter 48 and then press N. What is our I by Y? I by Y is 1. So 1 and then press I by Y. And then we need to compute what? We need to compute future value. So we press CPT and then we press FV. Then we press FV. So this is your calculator का functioning of how you calculate FV. ये copy कर लीजिए आपके copy में so that you don't forget it later. Just copy this calculator part in your copy so that you don't forget it later. Done, Bharat? हो गया? ठीक है. So this was how you compute future value of an investment. मैंने heading डाला था future value and present value. Now we will see how to compute present value. This was future value of an investment. ठीक है? Now we compute how to compute your present value. Write this question. Okay, first let's see how the formula works. ठीक है? So future value का formula, this was the formula. Present value becomes FV by 1 plus I by Y to the power N. Clear? ठीक है? Formula.
Now write the question. A man wants to purchase a house worth $1,000 5 years later. Current market rate is 10% compounded quarterly. Current market rate is 10% compounded quarterly. How much should he invest now? How much should he invest now? Clear? How much should he invest now? So PV calculate करने के लिए, FV calculate करने के लिए we needed a PV. To calculate PV, what do we need? FV. FV is given 2000. What is your I by Y? It is I by Y is 10% compounded quarterly, but I by Y is interest rate compounded periodically. तो पर पीरियड मतलब पर क्वार्टर कंपाउंडिंग कितना पे होगा? 10/4 which is 2.5% compounded periodically. Clear? Clear? What is N? N is number of compounding periods. N is number of compounding periods, which is 5 into 4, 20 quarters. Right? 20 quarters. Now we have everything to apply the formula. Apply the formula. What was our formula? PV is equal to FV by 1 plus I by Y to the power N. FV is 2000. 1 plus 2.5% to the power 20. 1 plus to the power 2.5% to the power 20. Clear? Can I write this as 2000 by 1.025 to the power 20? Can I write this as this? Clear? How do we use the calculator to solve this now? Calculator में, as I mentioned, we will start जो भी bracket के अंदर है उससे. We will start first with the bracket. Okay. First see what I am doing. 1.025 raise it to the power 20. So what did we get? We got the denominator. We got the denominator. अभी तक जो किया वो पता है सबको. Already done. How do we get this into the denominator? We press this button called 1 by x. तो इसको 1 by x करेंगे तो ये denominator में चला जाएगा. By pressing 1 by x, we send it to the denominator. We press 1 by x, it becomes this. ठीक है? So अब what do? We multiply it with 2000. We multiply it with 2000. So this is the answer we get. This is the answer we get. 1220. This is the present value. So the person has to invest. The person has to invest 1220.54 right now to buy a house worth 2000 5 years later. Clear? Clear? How to use the calculator to apply the formula? Clear? This, what I am saying, is the fastest way to do it.
इससे सबसे जल्दी होगा, इससे जल्दी पॉसिबल नहीं है फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, मैंने आपको एकदम शॉर्टेस्ट नंबर ऑफ बटन बताया है। तो हमेशा अंदर से स्टार्ट करोगे, टू द पावर करोगे, फिर 1/i करोगे, इनटू कर दोगे। या डू इट वंस, डू इट योरसेल्फ। नहीं, जब आप टीवीएम फंक्शन नहीं यूज कर रहे हो तो आपको ये प्रेस करने का जरूरत नहीं। Only when you are applying the TVM function, you press second TVM. Otherwise, how to clear your screen? You press this twice to clear your screen. Okay. Now do it yourself. 1.025 y to the power x 20, then 1 by x into 2000. Got the answer? Clear? Done? ठीक है, अब ये सेम चीज यूजिंग द टीवीएम फंक्शन, सेम थिंग यूजिंग द टीवीएम फंक्शन। आई एम राइटिंग डाउन द स्टेप्स, आप लोग कैलकुलेटर पे करो। ठीक है, प्रेस सेकंड, प्रेस FV button. This is to clear TVM. Okay, now you enter FV button, उसके ऊपर clear TVM लिखा हुआ होगा। We are finding the PV, but ये clear TVM है, मतलब आप अपना पहले जितना भी कैलकुलेशन किए थे उसको क्लियर कर रहे हो, so that there is no value recorded inside it. This is just to clear your calculator of any value stored in it. Okay, now to calculate PV, we first enter FV. You can enter in any order. ठीक है, इसमें कुछ वो नहीं है, there is no restriction, you can enter in any order, but I am entering FV first. 2000, press FV, it got stored as FV, then 20 नेगेटिव, करेक्ट, नेगेटिव कर लो या पॉजिटिव, हाँ नेगेटिव कर लो, राइट, डू प्लस माइनस, ठीक है, एंड देन प्रेस FV. Okay, 20 you enter it as n, 20 you entered it as n. This is the number of compounding periods. I by y is 2.5%, 2.5, enter it as I by y. What do you want to compute? You want to compute PV. So you press CPT and then you press PV. Are you getting the same answer? 1220.54. So two methods of doing it. If you want to copy the steps of the calculator, but right now आपने वो copy कर लिया, तो I think this is doable. So you don't need to copy it anymore. This is how you compute PV. So last class में इतना तक ही किए थे हम लोग, how to calculate PV, how to calculate FV. What we are doing is now fresh. What we will do now is fresh. The pace is fine, right? Pace is fine. This is the derivation of your formula which I was, जो मैंने आपको दे दिया था, ठीक है, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला जो मैंने आपको दे दिया था, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला का डेरिवेशन है. दिस इज हाउ यू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर वैल्यू. यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू नो इट, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू नो इट, आई एम जस्ट स्टिल टेलिंग यू. फटाफट, डोंट नीड टू कॉपी इट, आई विल गिव यू द PDF. ठीक है, वी डिड दिस सम ऊपर में, सेम सम का है ये. We invested 100 at time point 0, invested 100 at time point 0. How much does it become at time point 1? You earn an interest of 10% annually. So at time point 1 it becomes 110. Now compounding में क्या होता है? You earn interest on your initial principal as well as the interest earned. Compound में क्या होता है? Compound interest में क्या होता है? You earn interest on both your principal amount as well as your interest earned previously. So now this becomes my invested amount for period 2. This becomes my invested amount for period 2. So 110 again earns an interest of 10%. It becomes 121. Can I write this directly? 100 into 1 plus 10 plus 1 plus 10 as this, right? Now this becomes your investment for period 3. This becomes your investment for period 3. तो 121 आया था पीरियड 2 में,
at the end of period 2, you were with 121. Now 121 again gets an interest of 10%. It becomes 133.1. Or can I write it as this was your period 2 जो यहाँ से आया, and then additional interest of 1 year. So this becomes this. फॉर्मूला में मैं ये लिख सकता हूँ, पीरियड 4 में पीरियड 3 का प्रिंसिपल 1 more year of interest. You can use either the formula or you can use the TVM function in your calculator. You don't have to mention how you came up with the answer. You just need to tick the correct answer. ठीक है? But this is just for the sake of completeness. I'm telling you how the formula came into play. Just for the sake of completeness. You don't need to actually know this. Again, this earns another period of interest for this period. It becomes 146, which was the answer you got. Okay. But generically, can I write this as the formula now? Generic way में अब मैं इसको 5 पीरियड के करता, 6 पीरियड के लिए करता, it would have moved the same way. So generically I can write this as the formula, right? And this is the formula we were using right now to compute FV. ठीक है? This was the formula we were using right now to compute FV. So this was a completion of FV and PV. Now आप heading दो तीसरा, stated and effective interest rates. Stated and effective interest rates. Give the third heading as stated and effective interest rates. Correct. This is a theoretical scenario. तो फॉरवर्ड रेट्स है आपके सिलेबस में. When we are doing forward rates, तब हम लोग उस पे आएंगे. ठीक है, वो बाद में आएगा, एक चैप्टर में है. अभी we are deep diving into interest rates, only interest rates. Okay. So till now I was giving you an interest rate in your question. ठीक है, मैंने आपको दिया था एक क्वेश्चन के लिए, मैंने आपको दिया था ये 1 second. हाँ, I gave you an interest rate of 12% compounded monthly. But actual में it is written as 12% per annum compounded monthly. ठीक है, it is actually written as 12% per annum compounded monthly. So whatever interest rate I was giving in you in the question, जो क्वेश्चन में मैं आपको दे रहा था इंटरेस्ट रेट, उसको स्टेटेड इंटरेस्ट रेट बोलते हैं. उसको स्टेटेड इंटरेस्ट रेट बोलते हैं. What you were doing to calculate I by Y, आप उसको डिवाइड कर रहे थे by number of compounding frequencies, right? ये 12% का I by Y we came up with 12 by 12 or 1% compounded monthly. This is what we were taking at as I by Y, right? Effective interest rate. So whenever we were computing I by Y, we were actually converting stated interest rate to effective. We were actually converting stated interest rate to effective. ठीक है? The difference is just in the language. Difference is just in the language. Mathematics में कोई difference नहीं है. Mathematics में कोई भी difference नहीं है. It is just in the language. So now see what the language looks like. XA compounded annually, XA per annum compounded annually is the language for stated interest rate. It can also be written as just XA compounded annually. इसीलिए मैंने PA को highlight किया. PA might be there in your question, might not be there in your question. ठीक है, but in your question, in all, mostly all circumstances, they will always give you the stated rate. ठीक है, and I by Y compute करने के लिए you need to use the effective interest rate. ठीक है, so I was writing it again and again at that point in time also as compounded annually. So annual के लिए stated और effective में कोई difference नहीं होता. ठीक है, the difference starts when we do it semi-annually, compounded quarterly or monthly. ठीक है, so if I tell you XS compounded semi-annually, it becomes XS per half year. यहाँ per annum ही था,
ये बन जाता है पर हाफ ईयर, इट बिकम्स पर हाफ ईयर कंपाउंडेड सेमी एनुअली. दिस इज हाउ यू राइट इफेक्टिव रेट एज. We were mentioning this as simply I by Y. We were mentioning simply I by Y में what we were writing is, मैं सपोज आपको 12, अच्छा मैं ये इसमें क्वार्टरली में बताता हूँ बिकॉज वो कर चुके हैं तो वो ज्यादा कनेक्ट हो पाएगा. ठीक है. सो इन अनदर क्वेश्चन आई गेव यू 10% कंपाउंडेड क्वार्टरली. अभी हमने किया था एक क्वेश्चन, उसमें मैंने ये दिया था, राइट? उसको हमने इफेक्टिव में कैसे कन्वर्ट किया था? वी डिड 10/4 which is equal to 2.5%. Compounded quarterly we wrote compounded quarterly, but actually मतलब if we go by rules it should be written as per quarter compounded quarterly. ठीक है. But in your exam you don't have to write all this, so this is just again for your knowledge. We have already done the conversion in our previous questions, so this part is already kind of covered. अब जो हेडिंग लिखे थे उसमें आई बाई वाई जो भी आपने कैलकुलेट किया था प्रीवियस क्वेश्चन के लिए उसका एक रेफरेंस दे दो. एंड ये मैंने आपको नोट में दे दूंगा, ये मैं आपको ये पीडीएफ एज इट इज शेयर कर दूंगा. राइट नाउ यू जस्ट गिव अ रेफरेंस. आपने जो हेडिंग डाला था, मेक एन एरो टू द प्रीवियस सम यू कैलकुलेटेड, या फिर मेक एन एस्ट्रिक्स and C refer to the question previously done. So this conversion you were already doing. Now what happens is इस पे भी एक question आ सकता है. You can also get a question like this. ठीक है. Now write this question down. A person is earning an effective rate of 6% compounded annually. What is the stated rate? What is the stated rate? So when you are reading the question, be very careful. The interest rate जो आपको दिया हुआ है is the effective rate. It is not the stated rate. What they are asking you is the stated rate. Okay. So what did we do earlier? Effective rate. I will do it with a different color. Can I write effective rate is equal to state rate by compounding frequency? Can I write this? Can I write this? हमने पहले यही किया था I by Y निकालने के लिए. I by Y is effective rate which was stated rate by compounding frequency. Now the question is asking you what? Stated rate. The question is asking you what? The question is asking you for the stated rate. So can I write stated rate is equal to effective rate into my compounding frequency? So what is my answer? My answer was 6% into 2, which is ठीक ही लिखा है ना, 12% per annum. आई एम गोइंग वेरी स्लो विद दिस क्योंकि ये पूरा बेस है, बाद में आपको बहुत काम आएगा और इसमें बहुत ट्रिक्स आ सकते हैं. एनुअली, सॉरी, ये क्वेश्चन में मैंने दिया था ना 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली. हाँ, मतलब दिस इज अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन इन अ वे, बट व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज जब आप लोन लेने जाते हो, ठीक है, मतलब कोई भी लेने जाता है, आजकल बहुत कम होने लग गया है, बट पहले कैसे होता था कि
वो आपको बोल देते थे 6% आपको ईएमआई भरना होगा एट द रेट ऑफ 6%, नीचे में एस्ट्रिक्स देके वो डाल देंगे क्या बोलते हैं पर क्वार्टर कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज दैट यू आर एक्चुअली पेइंग 24% इंटरेस्ट रेट। सो दिस इज, इसका इंपॉर्टेंस उधर से आता है, बट सिलेबस ये अपडेट होता नहीं है आजकल। कंज्यूमर अवेयरनेस के टाइम पे यूजुअली कंपनीज डोंट डू दिस बिकॉज ये चीटिंग हो जाता है काइंड ऑफ, एंड दे स्ट्रेट अवे गिव यू कि आपका कितना ईएमआई आएगा, वो कैलकुलेट करके दे देता है, बट पहले तो रूल्स वर दैट स्ट्रिक्ट, उस वजह से ये इंपॉर्टेंट था। नाउ इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रैक्टिकली इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में अभी भी आ सकता है। ठीक है, सो आपको हमेशा ध्यान देना है whenever you are reading the question, you should keep in mind whether the rate given is an effective rate given or a stated rate which is given. ठीक है, understood the difference between effective and stated rates? Now moving ahead to one more question. Calculate the future value of a sum of money 100 invested for 2 years. For 2 years, earning an effective rate of 5% compounded semi-annually. Okay. What do we need to calculate? We need to calculate FV. What is my PV? PV is equal to 100, right? PV is equal to 100. What is N? What is N? N is number of compounding periods, number of, आप पहले देख लीजिए, कॉपी करने का टाइम दे दूंगा मैं आपको। ठीक है, आप देख लीजिए। PV is equal to 100, N is equal to number of compounding periods which is equal to 2 into कितना कंपाउंडिंग है, सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है, तो नंबर ऑफ हाफ ईयर्स कितना होता है 2 into 2 which is 4 half years. नाउ कंफ्यूजन होगा आई बाय वाई में। ठीक है, सो ओवर हियर तन्मय बताइए आई बाय वाई क्या होगा। प्लीज नोटिस दिस, I by Y is always effective rate, always effective rate. So what is going to be I by Y? 5 ही होगा, अपने divided by 2 नहीं कर रहे हैं, we are not dividing it by 2. ठीक है, even though this is compounded semi annually, question में लिखा हुआ था कि ये effective rate है, so we are not dividing it by 2. I by Y is going to be 5% only. Clear? This was the question. You have to divide it by 2. ठीक है, now I am parallelly giving you this question. Don't need to copy, just अब देखो एक बार। ठीक है, अगर मैं इसको लिखता, if I would have written it as calculate FV of sum of money 100 invested for 2 years earning 10% semi annually. ठीक है, तो इस केस में भी मेरा पीवी 100 है, एन मेरा अभी भी 4 है। ठीक है, आई बाई वाई इज इक्वल टू 10/2 विच इज 5% पर सेमी पर हाफ ईयर। एसेंशियली ये दोनों क्वेश्चन सेम है,
द ओनली डिफरेंस इज इफेक्टिव रेट. यहाँ मेंशन कर दिया आपको कि ये इफेक्टिव रेट ही दे दिया आपको डायरेक्ट. ठीक है, इधर कुछ मेंशन नहीं किया. जब कुछ मेंशन नहीं होता है तो वो स्टेटेड रेट आप अज्यूम करना उसको. ठीक है, अब नाउ आई एम एडिंग यहाँ अर्निंग stated rate. This word stated rate is totally optional. The question might not have this word. If it does not have this word, you will assume stated rate only. You need to calculate the effective rate. हाँ, correct. Clear है दोनों के बीच में difference? Now I will give you a third language also, which they can give. It is just tricking और कुछ नहीं है. The answer will be the same. It is just tricking you. ठीक है? It is just tricking you into. पहले आप ये कॉपी कर. अच्छा रुको, मैं तीसरा वाला दे देता हूँ, फिर एक साथ कॉपी कर लो. The above part is the same. कौन सा कलर लूं? ये वाला. ठीक है, ऊपर वाला पार्ट इज द सेम. आई एम नॉट राइटिंग इट अगेन. अर्निंग 5% per quarter compounded quarterly. Okay, this is what 5% per quarter compounded quarterly. Does this language look like this? Per quarter compounded quarterly. So this is what? This is effective rate that they have given. This is effective rate that they have given without mentioning the word effective. ठीक है? So this is also effective rate. एक और language that they can give you. Earning 10% per annum compounded semi-annually. Correct. So this is stated. You have to divide it by 2 to get the effective rate. So I've given you 4 languages. All the 4 mean the same thing. Okay? All the 4 mean the same thing. So you need to be very careful when you read the question. Okay? Moral of the story is you need to be very careful when you read the question. हाँ बोलिए. If per annum compounded annually है, तो effective and stated is the same. Other than that, they will never mention per. Per annum compounded annually अगर लिखता मैं, तो effective और stated same होता. उसमें दोनों सेम होता है. यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, either I write it XA per annum compounded annually और XA per annum compounded annually, सेम ही चीज रह जाएगा. वो कैलकुलेट करोगे, डिवाइडेड बाय 1 करोगे, वही आएगा. I by y क्या करोगे आप? If I tell you 10% compounded annually, ठीक है, what is your effective? I by y. I by y is 10 by 1, which is 10 only. ठीक है, so now आप इसको ऐसे कॉपी करो so that you understand that these are the 4 different languages that you can get, but answer to the question will be the same. So maybe you want to convert your copy into a landscape mode and copy it so that you understand that these 4 questions mean the same thing, one and the same thing. ठीक है, डन. सो ये भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं हम लोग इसका आंसर. सो FV is equal to PV into 1 plus I by y to the power n, which is equal to 100 into 1 plus 5% to the power 4. Right? So कैलकुलेटर में 1.05 y to the power x to the power 4 किया basically into 100, 121.55. 121.55. Now using the TVM function, second clear TVM and clear work,
100 plus minus as PV, 5 as I by I, and 4 as in CPT FV. सेम आंसर, ठीक है, सेम आंसर. तो हमने हर कंपाउंडिंग पीरियड का एक क्वेश्चन कर लिया. एनुअल कंपाउंडिंग भी कर लिया, सेमी एनुअल भी कर लिया, क्वार्टरली और मंथली भी कर लिया. अब मैं आपको एक एग्जॉटिक सम देता हूँ. ये आता नहीं है बट आ सकता है, ठीक है.